Okay. Good evening to all of you. I hope I'm audible and visible to all of you. If you can give me a yes or no in the chat box. Am I audible and visible? If I can get a confirmation from few. Gunjan, Dhanraj, okay. Alagu Shivam, okay. Great. So, again, a very warm welcome to all of you to the evening. And as we close the June, we have with us a session today on opportunities in business finance and the opportunities beyond the traditional finance roles with CA Aman Jain. And along with me, I already have Aman. Aman, good evening and welcome to the session. Hi, sir. Good evening. How are you? I'll just add you to the pin so that we both are together. Okay, great. So before we go to the formal start of the session, if I may request all the participants here to confirm their locations so that we get to know the demography where we are and whom we are with, so that the speaker also comes to know. So Dhanraj has logged in from Gurgaon, Gurugram. Gunjan, where are you from? And Alagu Shivam from Chennai, great. Gunjan Bansal from, nowadays with this all the online stuff, you have to work really hard to expect people to respond. In classes you can see the faces, you can see the expressions, but here, yes, it becomes a challenge. So right from north till south it is covered. Centrally from Indore I am conducting and helping out with the session. Let's see how it works further. Okay. I think can we Aman wait for another couple of minutes? 7:05 we should start at 7:04 Sure. so that once you are settled with everything and then we can go forward. No problem. Okay, it's 7:05. Let's respect the time for the speaker and our time and others' time also. So can we take a start, Aman? Permission Sure. granted? Yes, sir. Okay, great. So very good evening to all of you. On behalf of Degree to Placements, I am the founder, Chartered Accountant Deepak Mulchandani, and we do this effort of bringing the real life value and the real life information where it becomes really important beyond the noise to understand what exactly businesses do and how they do. With all the set of self-proclaimed gurus and mentors available across the social media platforms, it's always best to have a direct interaction with the people who are into the thick of the action. So today I have with me CA Aman Jain. He's a qualified chartered accountant from the December 21 exams. He started his career as a senior executive business finance in Wipro, and he joined in May 22 and worked till December 24. Post which he has joined a NBFC fintech startup called Snapmint as an assistant manager, business finance, and currently he is working there. So he has understood what a bigger company like Wipro does, what basically they are up to, because he was hired through a program of GFL or cohorts with Aman. Cohort. It was Wipro Technologies, and the Wipro cohorts program was there where he was picked up from India overall,
and I am so proud to say that I have been a small part of Aman's overall chartered accountancy journey, right from his foundations till his final. And I am so happy and proud to see him scaling up, going ahead, and working really hard and making a name for himself and his family. So, with immense pride, I introduce Chartered Accountant Aman Jain to you. So, Aman, welcome to this session, and I'm so happy that on a working day you have decided to give your valuable time to the candidates where they can understand what it is all about and how the world really works. Welcome, Anytime Aman. for you, sir. Over to you. Thank you, sir. So, hello everyone. As sir said, sir is sir played little part in my journey, but I said कि founding stone is sir. मतलब uh, till final till my job recruitment sir was there. So, uh, मतलब sir working day का कोई बात नहीं है आपके लिए every day anytime. So hi friends. That is So my real earning, and that is the love which I have earned. So I'm so proud of that. And that's really nice of all of you, because most of the times when I ask students to come back and share it, they more than happily agreed, except for their preoccupied timings. And if we agree with them, they are more than happy to share this wisdom. So that's something which I have earned. So I am really happy about it. Yes, Aman. absolutely. Yeah. So shall I start presentation? Yes, you want to have a presentation? I'll make you a co-host also so that you can Sure. present it easily. So I've not got much time, so quickly That's okay. prepared a presentation. The demography of candidates here is they have cleared chartered accountancy. Now they are looking for jobs. So all of Okay, them great. are fresh chartered accountants of May 26 exam. So they will be having certain set of questions with you. And if few more people have joined in, if they can confirm their location, it will help, because Gurgaon and Chennai has been confirmed. But I would expect others who have joined in to just tell us where they are attending this session from. So at least we get an idea. Kolkata. Oh, does it comes? Rahul from Indore. Gunjan from Faridabad. Okay. Did I hear Kolkata? Yes. Yes. Nick is from Kolkata. So, dear, you have covered the east, you have covered the south, you have covered the north, and as of now, Aman, you are in Bangalore. Mumbai, sir. You are in Mumbai. Okay. Great. So, more or less, the whole country is getting covered. Great, Yes, Aman. Go ahead. All sure. yours. I have made you the co-host, so you can present. Yeah. Just try if it's working or not. Is my screen visible? Yes, your Okay. screen sharing, So, but the screen is not visible as of now. You have business finance in corporate world. It reads. okay. Go So hi ahead. friends, I'm Aman Jain and I'm working in Snapment Financial Private Limited, that is NBFC startup. And pastly I've worked in Wipro. So presentation तो मैंने अभी जल्दी जल्दी में बनाया है, but we can means I can go through with the my experience what I've done in Wipro, what I'm doing in Snapment. So आप लोग उससे ज़्यादा connect कर पाओगे. So let's do the quick question. Who runs a business means if we'll do a business finance, it comprises of two words, business and finance. So every business need finance for its occupation. बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, तो बिजनेस कौन चलाता है सबसे पहले? इफ इट इज सीईओ, सेल्स हेड, ऑपरेशन हेड, और एनी मार्केटिंग मैनेजर और द प्रोडक्शन गाय, द आंसर इज ऑल ऑफ देम टुगेदर. मतलब कोई एक बंदा बिजनेस अकेले रन नहीं कर सकता है. सीईओ नीड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेल्स हेड, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर टू रन अ बिजनेस. तो इन सब में बिजनेस फाइनेंस का क्या काम है? बिजनेस फाइनेंस जो पर्टिकुलर फंक्शन है, वो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और सारे फंक्शंस को लिंक करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि सारे फंक्शन प्रॉपरली स्मूथली वर्क करें. सो व्हाट इज स्पेसिफिकली बिजनेस फाइनेंस?
सो बिजनेस फाइनेंस इज यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। मतलब अभी हम लोग का ट्रेडिशनल सीए रोल इज लाइक रिकॉर्डिंग दी past data, analyzing what is recorded, what is being wrong in the data, or what is the correct information to be presented to the authority। ये हमारा एक ट्रेडिशनल सीए प्रैक्टिस है। ट्रेडिशनल सीए का ये काम जो कि लेमन लैंग्वेज में सब लोग जानते हैं। बट करंटली बिजनेस फाइनेंस इज लुकिंग ऑफ फ्यूचर। बिजनेस फाइनेंस नाउ द करंट डेटा उसको एनालाइज करके उसको रिव्यू करके हम लोग आगे कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे पास एक कंपनी के फाइनेंशियल है। सो हाउ कैन आई forecast the revenue or forecast the cost, forecast the entire P&L or entire balance sheet of the company? That is the core of business finance. So, where does business finance sit? If we'll see, business finance manager is not sitting in a silo, एक सिंगल पोर्शन में काम नहीं करता है। अगर आप बिजनेस फाइनेंस मैनेजर का एक पर्टिकुलर डे देखोगे तो वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में ही हैज टू कनेक्ट टिल द डिलीवरी गाय हु इज delivering the product or services to the consumer, to this top CEO who is reporting to the investors or the outsider stakeholders. Business finance manager has to connect with entire organization for its purpose. So मतलब बिजनेस फाइनेंस का सेल्स के साथ भी काम है, ऑपरेशंस के साथ भी काम है, एचआर के साथ भी काम है, लीगल के साथ भी काम है, टैक्स वाले के साथ भी काम है। सो बिजनेस फाइनेंस आप मतलब इतने टाइम से सुन रहे हैं, मतलब देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस फाइनेंस एंड नाउ इट्स अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फील्ड है टू बी इन द जॉब। So we'll see what actually the business finance guy do. So actually the business finance के बंदे का काम होता है co-own the business financial plan. So if you see here it's written co-own, means if you have prepare, means आपने plan बनाया from the forecasting of the existing data, वहीं पर business finance manager का काम खत्म नहीं हो जाता है। He has to co-own the plan, means जो भी business है उसका जो भी बिजनेस है उसका जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी सारा प्रोजेक्शंस है उसको को ओन करना। मतलब सारा उसका जो भी फाइनेंशियल फोरकास्ट है वो हमें को ओन करना पड़ता है। मीन्स वी हैव टेक ओनरशिप ऑफ दैट। इफ समथिंग इज ऑफ, if something is not as per the projection, then it is the responsibility of the business finance manager. If you see, हम लोग के पास बहुत सारी पावर है टू कनेक्ट विद सीईओ टिल द डिलीवरी गाय। मतलब वी कैन कनेक्ट एनी टाइम विद द सीईओ टू द डिलीवरी गाय। सो एज आर बिलवेड स्पाइडरमैन से कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाउ इफ समथिंग गोज ऑफ, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैनेजर टू एक्सप्लेन टू द टॉप लेवल मैनेजर कि क्या ऑफ गया है, क्यों ऑफ गया है। सो मेन क्वेश्चन इज इन बिजनेस फाइनेंस इज व्हाई द particular number looks like it is. So now if we'll see the specific, the core responsibility of the business finance is to prepare the annual operating plan, or operating plan is nothing but the P&L, forecasted P&L or future P&L of the organization. So we have to prepare revenue forecast, expense forecast, margin forecast and cash forecast. So if you are seeing everything is going on forecast, मतलब हमको हर चीज forecast करना है। वी हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब प्रिडिक्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग को रैंडमली प्रिडिक्ट करना है या मैं पवन से परसेंटेज करके 5% 10% लगा के करूँ। दैट फोरकास्ट हैज टू बी कवर्ड बाय द practical assumption, the past trends, the future growth, the macroeconomic environment, and the values of the company, means what is the plan of the company in near future. So आपने फोरकास्टिंग अभी हम लोग ने सुना। सो व्हाट एक्चुअली इज फोरकास्टिंग? सो एज आई सेड इट इज एनालाइजिंग ट्रेंड्स। मतलब पास्ट में जो भी हो गया है दैट वी हैव टू एनालाइज कि व्हाट इज द ट्रेंड। इफ माई सेल इज इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट ऑफ 5%, मतलब ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट अगर 5% से मेरी सेल हर वक्त बढ़ रही है, सो आई कैन से मतलब समवन इन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू कैन से, अगर आप
विप्रो की बात ले, सो विप्रो इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेंटेनेंस टू दी सॉफ्टवेयर ही हैज सोल्ड टू दी मैनी कंपनीज. सो उस केस में वी आर फोरकास्टिंग द रेवेन्यू जस्ट बाय अप्लाइंग द कांस्टेंट परसेंटेज कि मैं पर्टिकुलरली इतने कॉन्ट्रैक्ट्स और करने वाला हूँ. सो आई हैव द ट्रेंड कि हर वक्त हर साल 5% और मंथली it is increasing at the pace of 5%. So I can forecast the revenue of next 5 year or next means if you'll say shorter runs or next 2 quarters or 3 quarters with the trend. बट अगर सेम चीज अगर मेरे को पीओसी कॉन्ट्रैक्ट मींस अगर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट में देखना या टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मैं एक्चुअली मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट अप्लाई सेम परसेंटेज फिक्स परसेंटेज टू द रेवेन्यू बिकॉज आई दैट इज वेरी वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग कि अगर मान लीजिए सिस्को और से फेसबुक इज अवेलिंग सर्विस ऑफ Facebook is availing services of Wipro. So he has to take into consideration ki uh, what is the revenue or what is the growth of the Facebook in near future, so as to estimate my revenue because my revenue entire revenue is dependent upon the my customer. मेरा कस्टमर मुझे जितना काम देगा उतने से ही मेरा रेवेन्यू और मेरा सारे P&L दिखने वाला है. सो फर्स्ट थिंग इज एनालाइजिंग ट्रेंड. Second thing is predict outcomes. Now, through trends, we have analyzed key what needs to be done. Now we have to predict outcome as well. Outcome on the basis of the macroeconomic environment or the values of the company or current policies which are going to undertake into the company. So if we'll say ki currently US Iran war is going on, so the IT portion and because of this AI advent, so IT portion is giving लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा कम जा रहा है. सो वी कैन से कि आउटकम ऐसा है कि मतलब ट्रेंड तो मेरा ये चले आ रहा है कि सपोर्ट एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मुझे 5% रेवेन्यू एक्स्ट्रा दे रहा है हर साल. बट विद द एडवेंट ऑफ एआई नाउ वो जो टिकट आइटम था जो मेरे रिसोर्सेज बैठ के यहाँ कर रहे थे वो एआई ही कर देगा. सो आई हैव टू कंसिडर दी आउटकम एज वेल कि मेरे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, करंटली सिचुएशन क्या है मार्केट में, उसके बेसिस पे मुझे ये सब देखना होता है. देन आई कैन अप्लाई द फोरकास्ट देयर. सो इन सब के बेसिस पे मैं फोरकास्ट बनाता हूँ. सो फोरकास्ट बना के आई नीड टू सी कि माई revenue has been increased. So why it has been increased? If it is some one off item, कुछ एक one time का revenue है, so I have to consider that कि I not factor into the ongoing estimates so that कि मेरा estimate खराब नहीं हो जाए. और मैंने जो फोरकास्ट बनाया उसके पीछे अंडरलाइंग अजम्पशन क्या थे, अंडरलाइंग वेरिएबल क्या थे. सपोज मेरे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट थे ऑलरेडी या मुझे 2 डिलीवरेबल ऑलरेडी थे बट वो डिलीवरेबल 3 क्वार्टर बाद खत्म होने वाले. सो फॉर नेक्स्ट ईयर आई शुड नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इन माई रेवेन्यू फैक्टर सो दैट कि मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट सही जाए. सो यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन से इट इज फोरकास्ट बट वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन द फोरकास्ट through our assumption and through our variables. So if something goes off, we have to, as I said, it's a great responsibility comes with great power. So we have to explain each and everything in detail that why it has been off and why it is not as per the estimate we have prepared. Because जो मेरा रेवेन्यू प्रोजेक्शन है, जो मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट है या P&L फोरकास्ट है, उससे आगे जो है मेरा टॉप मैनेजमेंट, द ही हैज कमिटेड मैनी थिंग टू द इन्वेस्टर. मतलब एज आई सेड कि हम लोग को बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ डील करना होता है. सो इफ आई एम डीलिंग विद द माई सेक्टर सीईओ, तो दैट सेक्टर सीईओ इज कमिटिंग टू द सीईओ, दैट सीईओ इज कमिटिंग टू द एमडी एंड एमडी इज कमिटिंग टू द एक्सटर्नल इन्वेस्टर. सो just one variable or one assumption you wrongly made, it will screw up the entire the forecast. So हम लोग का जो भी फोरकास्ट होगा वो प्रॉपर लॉजिकल अजम्पशन और वेरिएबल से होना चाहिए. नाउ मतलब हम लोग ने अजम्पशन और वेरिएबल तो ले सकते बट एज दी वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट इट इज अजम्पशन एंड वेरिएबल विच इज नॉट कांस्टेंट. तो कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा ही. सो वी हैव टू पुट द रिस्क एज वेल इन द फोरकास्ट that plus minus 5% due to particular factor or due to the particular contract which will not come or which may come, हम लोगों को रिस्क भी उसी के साथ फोरकास्ट के साथ देना होगा. सो बेसिकली दिस इज योर एंटायर रेवेन्यू फोरकास्ट काइंड ऑफ थिंग. मतलब कि वी हैव टू गिव अ
प्लान, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बिजनेस फाइनेंस मैनेजर का मंथ कैसे दिखता है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ही हैज टू गिव प्लान टू द टॉप मैनेजमेंट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन इन द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर। और फिर उसी को मटेरियलाइज करने के लिए, उसी को अंदर पॉइंट लाने के लिए एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम करता है टू गेट द फोरकास्ट करेक्टेड और टू द नियर टू द फोरकास्ट। सो नाउ इफ विल सी, हम लोग ने फोरकास्ट तो कर लिया, उसके बाद जब भी हम रेगुलर लेवल पे जो काम करने वाले हैं वो होगा रेवेन्यू मैनेजमेंट। दैट इज माय रेवेन्यू सोर्स, जो मैं जहां से सोर्स कर रहा हूँ टिल माय रिकॉर्डिंग ऑफ द रेवेन्यू। एंटायर प्रोसेस हैज टू बी ओन बाय द बिजनेस फाइनेंस मैनेजर। सो इफ आई एम सोर्सिंग एनी डील from the say Cisco or Facebook, so what I need to evaluate each and every deal, means what resources need to be there to fulfill the contract, what other additional cost I have to incur for the fulfilling the contract, what is the risk and approval requirements, means suppose I have to use any statutory license or some foreign license, so I need to uh, factor in that license, the risk of जो रिस्क होता है कि अगर वो मुझे लाइसेंस मिला कि नहीं, सो दैट रिस्क ऑल्सो हैव टू फैक्टर। और द मार्जिन ओवर विच माई कंपनी इज ऑपरेटिंग, सो इफ माई कॉन्स्टेंट मार्जिन इज 40% और से सपोज 30%, और मतलब हर बिजनेस का अलग मार्जिन होगा, सो आई हैव टू बी इन टू दैट एरिया कि मैं अगर एक डील क्लोज कर रहा हूँ, सो आई नीड टू लुक इन टू ऑल दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट इज प्राइसिंग एनालिसिस। So now deal is one thing. Now I have to quote price to the customer. So आप बिजनेस फाइनेंस को जस्ट ट्रीट लाइक कि मेरा एक खुद का बिजनेस है, एंड नाउ आई एम ओनिंग द एंटायर बिजनेस। सो सपोज आई एम इन विप्रो, सो that particular sector is my business, so I have to take care entirely of that sector. So from sourcing the deal to closing the deal and to delivering it, मतलब ये सब पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्टिकुलर लोग हैं जिसके लिए वही करेंगे। आई हैव जस्ट टू ओवरसी कि ये सारी चीज प्रोसेस में हो रही है कि नहीं, प्रॉपर हो रही है कि नहीं। सो फर्स्टली वी हैव सीन द डील रिव्यू। ऑब्वियसली दिस हैज बीन डन बाय द सेल्स और प्री सेल्स गाय, बट वी हैव टू बी विद देम and ensure that ki everything is going in right direction. Second is pricing analysis. So there is another pricing controller for this, but as a business finance manager you have to oversee that our margin is fulfilling with this. If this pricing is within my competition, so means I have to be in competition with अदर प्लेयर्स, सो आई हैव टू चेक कि अगर मेरे कॉम्पिटिटर से ये प्राइस मैच हो रहा है कि नहीं, मेरे मार्जिन से मैच हो रहा है कि नहीं, और फिर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी से मेंटेन होगी कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार शॉर्टर रन में कोई प्रोजेक्ट मार्जिन दे देता है, बट लॉन्गर रन इट विल इनकर दी मेजर कॉस्ट, सो दैट माई मार्जिन विल ड्रॉप इन द लॉन्गर रन, बट शॉर्टर रन में मेरे पास प्रॉफिट होगा। सो आई वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स वाइल क्लोजिंग एनी डील और वाइल डूइंग एनी डील क्लोजर। सो ये पूरा रेवेन्यू मैनेजमेंट में आता है, एंड देन वी हैव टू रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द डील हैज बीन क्लोज्ड, प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड, व्हाट शुड बी द टर्म्स, means on the basis of terms of the delivery or the SLA पेमेंट टर्म्स, उसके बेसिस पे ही मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट भी आ गया। सो इफ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डिलीवर्ड over the year, so you have to see ki how much effort has been done for particular year to be in the matching concept। तो आपने जो भी सीए में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, सारा knowledge you have to apply here। Means initially if anybody will get selected in the business finance, he'll think कि मतलब यहाँ पे particularly CA related कुछ काम नहीं हो रहा। when I was there, so when I joined I also thought कि CA related कुछ काम नहीं हो रहा, but you'll see the bigger picture, the wider perspective, you'll see कि पूरे सारे CA के concepts will apply here। means you'll your NPV thing of AFM, your audit thing of your contract review, FR for your revenue recognition, entire thing will be covered in this business finance। So your main role is revenue management. So any company's sole bread and butter is revenue. So business finance manager deals with the revenue management.
the next thing is margin management. Means if you have earned the revenue, but you have incurred the higher cost, your margin is low, then it's of no use actually. So if you'll see, if I'm earning revenue of 100 million, but my margin is 20%, then it's good. But if in next year I've earned revenue of 120 or 750, but my margin is 12%, so it's not a win-win situation for the company. Means one can say that revenue is increasing, but my margin is constantly dropping. So something is off. Means if I'm taking the revenue, means I'm taking the contract without considering the margin, or if the constant margin has been dropped globally, so that I have to check. Means if you have checked revenue, आपका काम वहीं पे खत्म नहीं हो जाता है. You have to check कि आपका मार्जिन क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट क्या इनकर हो रही है टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट. सो इफ आई हैव डिवाइडेड द डेज फॉर बिजनेस फाइनेंस फॉर अ मंथ. सो अगर मैंने 1 से लेके 5 तारीख तक मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट बना दिया है, आई हैव टू बी दी ऑन द एक्सपेंस साइड ऑफ P&L फॉर द एंटायर मंथ. कि रेवेन्यू तो मेरा फिक्स है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिए, या ये मतलब अगर मैं प्रोडक्ट कंपनी का एग्जांपल लूँ, तो मेरी ये डील क्लोज हो गई है फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर और पर्टिकुलर कस्टमर. आई हैव टू डिलीवर दिस. नाउ एट व्हाट कॉस्ट आई हैव टू डिलीवर दिस, ये भी मुझे इंश्योर करना है कि ये भी मेरे कंट्रोल में रहे. सो दिस ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्शन टीम और द डिलीवरी टीम जो भी मुझे डिलीवर करने वाला है प्रोडक्ट. बट उसको मार्जिन को रिड्यूस करना कॉन्स्टेंटली, कॉस्ट को रिड्यूस करना, सॉरी, कॉस्ट को रिड्यूस करना कॉन्स्टेंटली, और लेट्स से ऑप्टिमाइज करना, ये बिजनेस फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी है. सो इफ विल सी कि the major cost in the IT company is the people cost. If you pick up any P&L of the IT company, you'll see the major cost is the people cost. Now, cost optimization, anybody will say कि lay off the resources. So that would be their cost reduction. But actually, we have to think above this, because layoff is the last solution. Means we have to negotiate with the vendors. So there are many vendors, which means many software, servers, clouds, which we are using to deliver the products. So we have to negotiate with the vendor. अगर मैं प्रोडक्ट कंपनी की बात करूँ, तो मैं जो मेरा जहाँ से मैं परचेज कर रहा हूँ, जहाँ से मैं बल्क में, अगर मैं बल्क में परचेज कर सकता हूँ. सो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस मैनेजर का काम ये है कि पर्टिकुलर डील हैज बिन क्लोज. नाउ यू हैव द कॉस्ट फोरकास्ट एज वेल, कि फॉर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉस्ट विल बी इनकर्ड. नाउ हाउ कैन यू एड वैल्यू टू दी सिस्टम. मैं अगर कॉस्ट को, मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट को कम कर पाया थ्रू एनी ऑटोमेशन और दी, आपने जो सर ने SFM में पढ़ाया कि दी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल, तो उसके थ्रू वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट. सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैनेजर, कि रेवेन्यू के साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, बिकॉज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज योर मार्जिन. सो अगर आपका रेवेन्यू अनचेंज रहा, मतलब अगर आपने फोरकास्ट में 100 million का रेवेन्यू दिया, यू विल नॉट एबल टू अचीव 100 million, एंड आपका 90 million, मतलब जो आपका एस्टिमेटेड ओरिजिनल 90 million से 90 million पे ही है. बट इफ यू हैव रिड्यूस द कॉस्ट टू द एक्सटेंट, तो आपका मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा. सो यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट कि we have done something, because current nowadays it's very difficult to increase the revenue with this speed of matlab, with pace. So basically now people are focusing in cost optimization. So basically your profit has been done, so revenue minus cost, you have earned the profit. But profit simply doesn't pay the expenses actually. Profit is there for the books actually. We have to incur lot of things, lot of expenses, and it will be managed by working capital only. So if you'll see, working capital has been blocked for many businesses. अगर आप प्रोडक्शन कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करोगे, सो उनका वर्किंग कैपिटल मेजरली इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाता है और डेटर में ब्लॉक हो जाता है. इफ यूल सी पिक अप द IT कंपनी, उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक इन दी अनबिल्ड रेवेन्यू. सो अनबिल्ड रेवेन्यू इज काइंड ऑफ थिंग इफ वी हैव डिलीवर्ड द सर्विसेज, but we have not built the amount to the customer, because the some services are pending, or the as per the agreement the billing date is different. So now
the entire work of the business finance manager is to manage the working capital. So if unbilled is there, so you have to thrive to reduce the unbilled. So if means we have delivered the services of say suppose one contract, but it is not billed yet. So we have to check with the delivery team, means the engineer team or the sales team who is working with the client or the customer, to get the amount billed to the customer so that we can earn the amount as soon as possible, because everything the TAT for the collection will start from the invoicing date. So we have to be ensure that the invoicing will done in the correct pace. Also, we have to ensure that my bad debt would be in the correct position. So in any businesses, you'll see the bad debt is the normal thing. मतलब आप कुछ business कर रहे हो, so it's normal that 5% will go in loss. So we have to ensure that our bad debt uh, is in controlled manner. Means we have to thrive for the collection. जो collection team है, जो recovery team है, we have to ensure कि वो collection properly आ रहा है कि नहीं. So this entire process means from revenue to costing to working capital. This entire process has to be owned by the business finance manager. Now business मतलब ये सारी process को own करने के लिए, मतलब आपने इतना सारा सुन लिया, बट एक अकेला बंदा इतना सब कुछ कर नहीं सकता है. सो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग बाय एवरीथिंग बाय आवर हैंड. मतलब हम लोग को हर जगह हम लोग को एक्चुअली में कुछ करना नहीं है. एवरीथिंग विल बी डन बाय द रिस्पेक्टिव टीम. मतलब सेल्स गाय विल इंश्योर कि मेरा डील आए, मेरी डील क्लोज हो, बिकॉज हिज incentive will linked with the deal close. But we have to ensure with sales कि वो डील प्रॉपरली क्लोज हो रही है कि नहीं, विद द प्रॉपर अरेंजमेंट, विद द प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन, इट्स क्लोज. ऑपरेशन गाय के साथ मुझे काम करना है कि जो मेरी डील क्लोज हुई है, जो प्रोसेस मुझे डिलीवर कराना है, वो प्रॉपरली डिलीवर हो रहा है कि नहीं. डिलीवरी टीम के साथ आई हैव टू इंश्योर कि द इनवॉइसिंग इज रेज्ड करेक्टली, the work which has been delivered to the customer is of the proper quality or the as per the agreement. Because sometimes अगर डिलीवरी टीम ही मतलब डिलीवरी टीम इज द मेन ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द दिस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो ही बिजनेस वो ही अगर उसका काम ढंग से नहीं करेगा, तो मेरा सारा कस्टमर इंटरफेस से बिगड़ जाएगा. सो नाउ आई हैव टू टेक विद द डिलीवरी टीम टू इंश्योर कि प्रॉपरली सब काम हो रहा है कि नहीं. देन आई हैव टू चेक विद द लीगल एंड टैक्स टीम टू इंश्योर कि मेरी इन्वॉइसिंग में या मेरे जो भी डील क्लोजर में कोई टैक्स क्लॉज होना चाहिए या पर्टिकुलरली कलेक्शन क्लॉज होना चाहिए. सो इफ इट इज बिन करेक्टली मेंशन्ड और नॉट. सो आप देखोगे तो बिजनेस फाइनेंस मैनेजर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका पूरा दिन का कनेक्ट होता है. मीन्स द डेज हैज बिन डिवाइडेड, द टाइमिंग हैज बिन डिवाइडेड, बट ही हैज टू डील विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द वर्क डन. सो इफ यूल सी कि अगर एक बिजनेस प्रॉपरली काम कर रहा है, सो बिजनेस फाइनेंस इज द की चेन फॉर दैट बिजनेस. So if I'll share real life case study. So I have one deal with me that was of around more than 500 million, and basically it was export only. So we have to consider everything. मतलब that deal involves procurement of different servers. We have to use different clouds. We have to use the different resources from the contractors as well. Means if Wipro is not having, or organization is not having that particular skill of resources. So that entire thing means you have to be think like a business owner in this case. So अगर एक डील मुझे क्लोज करना है, आई हैव दिस डील, सो आई नीड टू एंगेज विद द राइट फ्रॉम द सेल्स, प्री सेल्स और रेदर, कि जो बंदा बिजनेस लेके आ रहा है, जो बंदा क्लोज कर रहा है और जो बंदा डिलीवर कर रहा है. सो आई हैव टू एंगेज विद एवरीवन कि मेरे एक डील में क्या होगा. आई हैव एंगेज्ड विद द ऑडिटर और आर एज वेल, मीन्स रेवेन्यू एश्योरेंस टीम इज देयर टू इंश्योर कि मैं रेवेन्यू हैज बिन रिकॉर्डेड करेक्टली, और मेरे फोरकास्ट के मतलब जो रेवेन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्ड होने वाला था, मेरा फोरकास्ट भी वैसे ही बने. सो यू कैन नॉट फोरकास्ट प्ले द फोरकास्ट एज इट इज. मीन्स यू हैव टू बी कंसिडरेबल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और द इंडेज, बिकॉज आपके पी एंड एल में जो जाने वाला है वो तो जाएगा सब इंडेज के हिसाब से. सपोज आपने एक डील क्लोज कर ली जो कि 5 साल में जिसका बेनिफिट अक्रू होने वाला है,
बट आपने उसका रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू कंसिडर कर लिया इन द करंट ईयर और से सपोज 2 ईयर में, सो दैट एंटायर फोरकास्ट विल गो फॉर टॉस। मतलब आपका 2 साल तक तो आप दिखाओगे कि यू आर हैविंग रेवेन्यू अपसाइड, मार्जिन अपसाइड। अगले 3 साल में you'll lose the entire revenue. So you have to be with the accounting team as well, tax team as well, invoicing team as well, entire team. You have to be with in connect with them to close a particular deal. Now, what skill is required means you have cleared the CA currently. So you means, and I think some people will want to go in business finance. So basically, if you'll see the main skill, if you'll require, is the stakeholder management or the communication, you can say. How can you handle the people? So you have to get the work done means as the, मतलब बिजनेस फाइनेंस टाइटल के साथ एक टाइटल मीन्स इवन इफ यू आर सीनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव, बट द टाइटल विल कम विद द बिजनेस फाइनेंस मैनेजर. So you have to manage the people actually. You have to manage the sales guy to get the work done. You have to manage the operations guy to get the work done. So it's entire stakeholders management means आपका जो काम है, the forecasting, the ensuring the everything is being in line, वो तो है ही, but we have to इंश्योर दैट कि जो दूसरे काम कर रहे हैं वो भी करेक्ट लाइन में जा रहा है. सो दैट एंटायर थिंग यू हैव टू नो द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. देन इफ विल गो थ्रू द टेक्निकल स्किल, देयर इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फोरकास्टिंग. मतलब फोरकास्टिंग इज बेसिकली नाउ डेज वेरियस टूल्स आर देयर, पावर बी आई, और मतलब अभी तो एआई के उसमें बहुत सारे फोरकास्टिंग टूल आ गए. यू जस्ट नीड नॉट टू लर्न द फोरकास्टिंग बट द रीजन बिहाइंड द और द अजम्पशन बिहाइंड द फोरकास्टिंग. सो बेसिकली हमारे यहाँ कहा जाता है कि इट इज़ द फाइनेंशियल स्टोरी टेलिंग. सो आप लोगों को डिफरेंट अजम्पशन देने पड़ेंगे बिकॉज समथिंग इज देयर जो एक्चुअली में डिलीवरी गाय छुपाना चाहता है. सो देर आर केसेस वेयर some delivery guy want to report revenue in Q1 instead of Q3. So he has some personal target. So we have to manage all entire thing की मतलब the हम लोग का जो बंदा है वो भी मैनेज हो जाए, मेरे अकाउंटिंग जो है वो भी करेक्टली मैनेज हो जाए, और मेरा जो टॉप मैनेजमेंट का टारगेट है वो भी मैनेज हो जाए. सो फोरकास्टिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मार्जिन एनालिसिस, जो आपका एनालिटिकल स्किल है वो यहाँ पे थोड़ी सी शार्प चाहिए. बिकॉज यू हैव टू चेक कि कहाँ पे क्या हो रहा है. इफ इज रेवेन्यू इज गोइंग डाउन, वाई इट इज गोइंग डाउन. If it is not as per forecast, why it is not as per forecast. If it is due to some macroeconomic factor, or due to some specific delivery issue, or if something is wrong in my forecast as well. तो वो सारी चीज को कंसिडर करना होता है. इसलिए वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन एनालिटिकल स्किल और लॉजिकल स्किल, यू कैन से. And then if we'll go through behavioral skill, you means as I said, communication is important, but another thing is business acumen actually. So if you are closing any deal, so you have to connect with the client as well. So there you need to understand your current business as well, and then explain to the client to get the amount, to get the deal. So you have to negotiate with the client. So entire business means it's like you are doing your own business. So if you are suppose if you are into the business finance of some product company, say Vedanta. So for particular unit, you are the business owner of that entire thing. तो आप लोगों को ही वी हैव टू क्लोज द डील. मतलब देन इट्स ऑन अपॉन द मीन्स इनिशियली आप लोगों के पास इनिशियली इज नॉट बी देयर, बट गोइंग फॉरवर्ड और द नियर फ्यूचर में इट विल बी देयर. Now, what makes a great business finance professional is not basically to understand what happened. We have to see why did it happen and what should we do next. So we have, मतलब मेरे साथ ही कई बार हुआ है कि the forecast which I have prepared has not, the actual has not been come to the that extent. So now it's your responsibility to explain firstly. First you have to understand yourself कि why it is not there. अगर आपके फोरकास्ट में कुछ गलती था, या एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण मेरा फोरकास्ट नहीं हुआ, या अगर इंक्रीज भी हुआ है रेवेन्यू, दैट ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन टू द टॉप मैनेजमेंट कि ये क्यों हुआ है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि
अगर आप अच्छा ही अच्छा दोगे तो वो और अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे. इफ यू हैव अर्नड 5, मतलब इफ यू हैव फोरकास्टेड 5% एंड इफ यू हैव अचीव्ड 7%, नाउ योर बेस लाइन इज 7%. एवरीथिंग विल टेक अप विद द 7%. नाउ वो 7 से थ्राइव होगा कि 7 to 7.5 लेके जाएंगे. बट वी हैव टू बी द रीजन ऑफ द एवरीथिंग, कि अगर 5 से 7 हुआ है या 5 से 4 हुआ है, सो वाई, व्हाट इज द रीजन, एंड what should we do next. अगर मेरा मार्जिन सही हो रहा है, if my revenue is increasing, so if I have to incur many more costs to gain the more deals, और अगर मेरा मार्जिन कम हो रहा है तो मुझे क्या करना है टू इंश्योर कि मेरा मार्जिन सही हो जाए. सो दैट इज फ्रॉम माई एंड. मतलब अगर आप बिजनेस फाइनेंस प्रोफेशनल को अगर सम करोगे एक में, तो आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग टेल्स द स्टोरी ऑफ द पास्ट. मतलब अकाउंटिंग बताता है कि क्या हुआ है, बिजनेस फाइनेंस देखेगा क्या हुआ है, उसके बाद राइट्स द स्टोरी ऑफ फ्यूचर, वहां पे आगे क्या होगा और इंश्योर करेगा कि वो हो. सो दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस. नाउ ओवर टू यू सर. Thank you very much. Even I got some new lessons today. So I'm so happy that I was listening and trying to understand things. And I think the last line sums it all. Record तो सब कर लिया, आगे क्या होगा, that is business finance. So great. And this was like what business finance is. And I think Dhanraj in the beginning said that it's a boring role, therefore people are not joining. Dhanraj, I think you will also change your opinion that there are so many dimensions attached to business finance. It is not as simple as the AFM module. Everything here, you become a part of a big ecosystem and you are supporting that ecosystem of the business. And I think it equally applies to smaller businesses also, Aman. It's not Correct, the sir, case correct. that only large corporations are supposed to do this. As you So said that there is a revenue forecast and then you are dedicated on the credit side, then you are dedicated on the debit side for few days, and then you plan accordingly that how it has to be achieved. And as you said in the beginning you said that once you get into this particular action, and as you said that if you give good numbers to them, then you become problem. Matlab, good work becomes brings in more work to you, so you need to handle those things also. So it's as good as like full business management. It is not only finance related, it's full business management, handling people, understanding expectations, factoring in all the aspects, even the macro factors, when your next revenue is going to come down, which contracts you are going to make up. It's like a total variable thing continuously taken up properly. correct. So Swaroop has come up that it's more of a financial transformation domain, and now they'll come up with all those questions. First, now I remember their questions nowadays. What I should study to get interview in this? A. Second question will come, where to find the vacancies for this? B. Third, how much salary I will get? Fourth, is there work from home available? Fifth, So what is the work life balance? So I think these are like typical questions for all the CA freshers. I'm on a lighter side if I have recited all of them together, but I think these are the valid. Okay, so it's okay, I sir. think Generic question. मतलब okay. So I've got some fun going around. So Charmi says, "Sir, roast mat karo. ये सब मेरे सवाल हैं." I am doing this all this over and over after every exams. So I've started remembering all these questions. So leave oh, around the fun. Aman, I think you should help them because that is the purpose of this session. sure, sure. What to study and how to see. Aman, you have also been in articleship. You were also with Fadnis and Gupta, a very respected firm of Indore. But still, many things the curriculum and this doesn't cover. I'll tell you, friends, Aman was a part of the Wipro cohorts. Wipro cohorts is a big program where they intake chartered accountants for almost 2 years program. Am I correct, Aman? It's Correct, 2 years correct. program. And they make you run in all the different domains. Uh, So so Aman, it's throw some light on that कि विप्रो ने क्या क्या सिखाया. आप जब सीए बने थे, when you became a chartered accountant, what was the gap which you found despite of having a good amount of experience and exposure? So how do these kids, because 3 years before you were on the same stage, no, correct. 5 years now, sorry.
Yeah, 5 years before you're in the same stage. So you can tell them, and technology has improved a lot. Things have become easy, but there is a problem of plenty. So Correct. please guide them on that. Sure. So फर्स्टली इफ विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी, तो मतलब अभी वैकेंसीज तो बहुत है, मतलब बिजनेस फाइनेंस गाय इज लाइक बारिश के मौसम में गर्म भजिया, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज एवरी बिजनेस नीड द फाइनेंशियल एक्यूमेंट। फाइनेंस के बिना तो बिजनेस काम कर नहीं पाएगा। सेकेंडली मतलब if as sir said I got into Wipro through cohort program, so मतलब उसमें इट्स माय किस्मत की, मतलब वो मुझे मिला, मतलब इफ यूल गो थ्रू विप्रो कोहर्ट, आप किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं, बी टैक्स, लीगल, FP&A, बिजनेस फाइनेंस, कंट्रोलरशिप, और फिर दे हैव रोटेशन पॉलिसी, आफ्टर 1 year दे रोटेट टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो मतलब आप आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके मैनेजर के रिव्यू के बेसिस पे, एंड आप मतलब दे हैव सर्टेन टेस्ट और द स्किल्स कोर्स, तो उसके बेसिस पे आप कोई भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि बिजनेस फाइनेंस में जाना बहुत डिफिकल्ट है, बट वन थिंग इज वी आर इन कंपटीशन विद द MBAs। सो जैसे मैं काम कर रहा था, सो आई हैव मैनी कलीग्स विद टॉप B स्कूल्स MBA। तो मतलब बहुत कम मतलब CAs आर देयर, बट अधिकतर टॉप स्कूल MBAs, top B school MBAs are there which are working in the business finance role. So आपका कंपटीशन उनसे है, पर्टिकुलरली इफ यूल सी दी स्किल। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो ज्यादा कुछ सिखाता नहीं है, मतलब यूल मतलब आप पहला तो आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे थ्रू आर करिकुलम, क्योंकि मतलब ऐसे इतना प्रेशर होता नहीं है। बट इफ यूल सी, मतलब अगर आपका कोई छोटा बिजनेस भी हो, जैसे सर ने कहा कि स्मॉल स्केल पे भी ये पूरा लॉजिक अप्लाई हो सकता है। मतलब व्हाट, अगर मैं इनिशियली जब मैं गया था, सो आई आई टू मतलब मुझे ये बोला गया था कि टेक इट एज अ सिंगल स्टेप, मतलब अभी आप जस्ट वन कस्टमर, यू आर हैंडलिंग ओनली वन कस्टमर, इस पूरे एक कस्टमर का आपको बिजनेस संभालना है। देन ग्रेजुअली फॉर वन सेक्टर और वन एंटायर SMU और GBL आपको वो पूरा संभालना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको पर्टिकुलरली मतलब टेक्निकल, जैसे मैं बोलूँ तो स्किल रिक्वायर्ड है। यू हैव टू बी मतलब आपका बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा होना चाहिए। सो दिल टेस्ट कि आप कोई पर्टिकुलर डील को किस तरह से क्लोज कर सकते हो, या पर्टिकुलर केस में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। तो बेसिकली आपका जो पेपर 6 है, आई थिंक जो केस स्टडी वाला है, वहां पे ये वाला, इस रोल के लिए वो बहुत हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर, क्योंकि वहां पे आपका सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, FR AFM ऑडिट। सो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है कि आपको इंश्योर करना है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, आपने जो फोरकास्ट दिया है वो आपके AFM के हिसाब से हो रहा है। सो ऑल थिंग, मतलब आपके पास स्किल सब है। सो इफ यू हैव क्वालिफाइड, यू हैव ऑल द स्किल टू बी इन द बिजनेस फाइनेंस, यू जस्ट नीड टू बी लिटिल मोर एनालिटिकल इन द थिंकिंग, और वो भी ग्रेजुअली टाइम के साथ आ जाएगा। बट इफ यू वांट टू गो इनटू बिजनेस फाइनेंस, सो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट यू कैन गो एनीवे, एंड मतलब कैन डू ग्रेटर देन एनी टॉप स्कूल बी और B स्कूल, टॉप B स्कूल। तो एनी क्वेश्चंस? Yes. So, yeah, one question. Charmi has got a question, please. What is cohort program? Do we apply from site? Charmi, that is once in a year or twice in a year program done by Wipro, where they recruit chartered accountants from campus and off campus. They take them through different rounds and then they hire them for the company. It's a 2 year program. In simple terms, if I may say you, it's as good as a paid MBA. You get salary and you do an MBA. They will put you into different businesses of Wipro. Once you will be a part of the business finance team, other the audit team, third you will also in terms of the revenue and the contract team, the legal team.
इंटरनेशनल Then टैक्सेशन। international taxation. Yes, Aman, if you can add, please. हाँ सर, मतलब आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन, रेवेन्यू एश्योरेंस, कंट्रोलरशिप, मतलब जो भी फेसेट्स हो सकते हैं फाइनेंस के, वो सब, मतलब They जो भी make एक you, फाइनेंस। they make you work in all those, ताकि you get an overall idea of the business, and then they finally place you in one of the places. It involves case studies, it involves trainings. बहुत अच्छा प्रोग्राम है. There are two programs actually from Wipro. Wipro Technologies का program is Wipro Cohorts, and Wipro Enterprises, which makes all the manufacturing related efforts. They have got GFL. So Wipro GFL is there and Wipro Cohorts is there. For Wipro Enterprises, it is GFL, Global Finance Leaders, and for Wipro Technologies, it is Wipro Cohorts. And they open up the vacancies, they take CVs, they take interviews. It's a very proper, organized process. Charmi. Yeah, Aman. On the skill set, Aman, which I said that syllabus पूरा नहीं सिखाता है, but beyond the syllabus, what all they can keep themselves, because there are many tools which have become a regular usage tools in companies, which the curriculum doesn't teaches you. Correct. So, sir, So, Power BI is one tool which is relevant nowadays. So, for different dashboards or reporting, Power BI is being used. And now, analytical purpose, now companies are using Copilot or Claude. So, matlab, that is all on the job tools. Matlab, agar if you will have a knowledge of that, it's added advantage. But agar आपका business acumen अच्छा, and if you got selected, then on the job they'll able to train you, मतलब manager and through manager and all. But Power BI, Excel is must, means you have to be proficient in Excel. So basically Excel, Power BI, and the analytical tools. correct. This is one craze which every chartered accountancy student develops, or craze, or let's say a FOMO. After becoming a CA, I am not sufficient. I need to do this master class, that master class. I need to do this and I need to do that. Does it really is required actually? Honestly speaking, sir, I have not done any master classes. I've just enrolled in your program and I've got selected in Wipro. So basically एक तरीके से इट्स नॉट नेसेसरी एक्चुअली, मतलब इफ यू हैव proficient in what you have done. So initially the company doesn't want the experience because you are fresher as such. So company, अगर आपके resume में जो लिखा हुआ है of the articleship experience, if you will be able to explain that clearly, if you will be able to explain कि आपने क्या काम किया है, that would be sufficient to pick that would be sufficient for you to pick the company. मतलब अगर आप कितने अच्छे से अपना काम बता पा रहे हो कंपनी को, वो सफिशिएंट होता है टू गेट इनटू द कंपनी। मतलब दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने कितना डीपली वो काम किया है और कितना डीपली आपको नॉलेज है। सो योर एंटायर रेज्यूमे विल गेट स्कैन्ड थ्रू, एंड अगर आप खुद से ही वो रेज्यूमे स्कैन कर लोगे, सो विल बी गुड। So that's where the various very important point comes in, that any chartered accountant who has completed the degree should not feel inferior first कि मेरा कुछ नहीं हुआ है. They have done their articleship, they have passed the paper, so that means they have the brains and the guts. Point one. Point two, they should be able to explain the work. First of all, they should write what they have done in their CV properly, and then they should be able to explain it properly, that how did they work, what did they achieve, how did they convince the client, how did they close the issue, and how did they reported the issue. So right from the initiation of the transaction to the reporting, record to report, R to R. So the overall explanation should be made available so that the person comes to know that yes, he or she has done some work. And the most important point which I want to tell you to all the fresh started accountants is, you cannot do the work of the whole world in your articleship. Whatever happens in articleship is something which you get trained on, and then you can build upon that. I think what Aman is doing also, he did not experience directly in articleship. Correctly, absolutely, sir. Correct. So understand it that way. Being a chartered accountant, it is a proof that you are able to learn, understand and comprehend things. Now every day there will be certain new things coming in which you need to be ready with.
Okay, Rahul has a question. Proficient. I think Rahul, you wanted to understand to what level of Excel knowledge will be great. If I am not wrong, Rahul, was that question, that what level of Excel knowledge is expected from a CA fresher? Because that is how you define proficiency. So अमन, वी लुकअप्स, एच लुकअप्स, पाइवट, ये सब बेसिक्स हो गए या यहाँ तक ही चाहिए? हाँ मतलब इसके बाद एड ऑन फंक्शन सम मतलब हाँ बी लुकअप एक्स लुकअप एच लुकअप इज सफिशिएंट मतलब इफ इन माय टर्मिनोलॉजी और मतलब अभी तक तो सिर्फ यही काम आ रहा है नाउ इन पाइवेट ऑल्सो एडवांस एक्सेल आर बीइंग यूज्ड और अभी तो को पायलट के साथ एक्सेल यूज हो रहा है सो बट करंटली इफ यू आर हैविंग वी लुकअप एच लुकअप नॉलेज इट्स ओके मतलब एक्स लुकअप और वो उसमें अभी आई हैव ऑल्सो लर्न फ्यू थिंग्स न्यू, कुछ वो स्लाइसेस और वो स्लाइसर्स आए हैं, वो शायद और बेटर हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है. सो आई थिंक you can is it matlab you can even ask AI to take your test on many things and Excel skills also. I think AI can also test your Excel skills and train you. So वैसा कर लेना चाहिए राहुल आपको. Yes, any more questions from others? हाँ, धनराज has a question. Do we have any threat from AI? देखो मैंने आपको पहले ही बोला मतलब बेसिकली यहाँ एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग लगती है सो नाउ अनलेस मशीन लर्निंग हैज रीच्ड दैट स्टेज आपके पास अभी स्कोप है एंड मतलब मशीन लर्निंग भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा दैट ह्यूमन माइंड इज थिंकिंग सो इट्स ऑल मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स दो चीज है एनालिटिकल माइंड और मैनेजिंग द स्टेक होल्डर्स एआई कैन नॉट मैनेज द स्टेक होल्डर्स इफ यू हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द पीपल वो नहीं कर सकता है सो सपोज इफ एनी डिलीवरी गाय इज want to do something and the sale guy want to do something मतलब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं सो एक डील में अगर जो सेल्स वाला बंदा था ही वांट्स पर्टिकुलर मार्जिन क्योंकि उसका इंसेंटिव वहां लिंक था डिलीवरी गाय का क्योंकि वो खुद ग्राउंड पे डिलीवर करने वाला है उसके इंजीनियर से सो ही नोज की पर्टिकुलर किस मार्जिन के साथ जाने वाला है सो आपको उन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन बैठाना है दैट एआई कैन नॉट डू एनीवे मतलब वो आपको ही करना पड़ेगा सो दैट इज बेसिकली पब्लिक स्किल और द जो एनालिटिकल थिंकिंग करना है आपको अगर मतलब एआई कैन गिव यू प्लॉजिबल रीजंस कि अगर मेरा रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है तो ये इन इन कारण से हुआ है बट पर्टिकुलरली क्या कारण है वो आपको खुद इंश्योर मतलब देखना पड़ेगा सो एआई कैन इनहेंस और मतलब आपके काम को आसान कर सकता है बट थ्रेट आपके लिए कुछ भी नहीं है और हाँ वन एक चीज मतलब अगर आप एआई यूज नहीं करोगे उसके साथ में तो फिर वो थ्रेट है बट अगर आप एआई यूज कर रहे हो साथ में सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू रादर Anything else my participants would like to ask? Because we have this beautiful habit of participants remaining silent and absorbing everything on their own. In this virtual world, that is a problem actually. Still, any more questions? Okay. If there are openings in Wipro for business finance, there will be no separate openings for business finance, Charmi. There will be openings only for Wipro cohorts. And I think they take chartered accountants through that only, Aman, if I am not wrong. यस सर करेक्ट Fresh chartered accountants? प्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट विल गो थ्रू कोवर्ट ओनली Correct. So that is the way. And semi-qualified chartered accountants do. Is there a need as of now, Aman? They're just straight away asking for job. हाँ मतलब बहुत सारी अटेम्प्ट फिल्टर फॉर कोवर्ट या इट इज देयर मतलब तीन चार अटेम्प्ट है तो बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना चाहिए आई मीन्स आई एम नॉट श्योर ऑफ करंट पॉलिसी बट एट माई टाइम इट वॉज ऑफ फोर अटेम्प्ट सो इट्स ओके मीन्स इफ यू मोर देन फोर अटेम्प्ट इज ओके हाँ for semi-qualified CAs, not particularly in Snapman, but there are many openings for semi-qualified CAs, so you can go. If I'll see it is there in Snapman, I'll be happy to refer you. But I'm able to see many openings for semi-qualified CAs nowadays.
That. Oh, it can be verified, Dhanraj. Let me tell you that. Very well verified. There is something called background verification, which is very religious. Background verification companies have got access and legal access to your records. So even if you say I have not attempted this so many times, they will be able to check, and once they will be able to check, this will be an integrity issue that you lied, and then you will be barred. ये गलती कभी मत करना. Don't do this mistake. Sure, Okay. Rahul. So, first I'll answer Rahul's question. So, interview basically तीन राउंड में था. So, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड वुड बी टेक्निकल. सो आपकी बेसिकली जैसे मैंने कहा कि रेज्यूमे, इफ यू आप रेज्यूमे को खोद के भी मतलब आपने जो भी काम किया है, यू हैव टू एक्सप्लेन देम करेक्टली. मतलब उसी में से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे. सो और टेक्निकल जो है बेसिकली आपका, आपने जो भी करिकुलम में पढ़ा है, द टेक्निकल यू हैव टू बी स्ट्रांग इन द टेक्निकल एंड योर रेज्यूमे, योर वर्क विच यू हैव डन ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप. Or first and second round is that, and third round means first round is being taken by the senior manager level, and then second round is taken by AVP, and then behavioral round is being taken by some HR manager, or they're specifically recruiter who has been hired for the behavioral thing. But it's not, I'll say, difficult, or means there are four step rather. One is your test will be there, written test will be there. If you get cleared that test, then you have to be selected by that interview panel. So total चार राउंड होंगे basically. So टेक्निकल में स्ट्रांग हो जाओ, ज्यादा मतलब बेसिकली आपने जो किया है काम उसमें स्ट्रांग हो जाओ. सो इट वुड बी ओके, मीन्स you'll be able to clear the interview. Now I think there are certain operational related questions for which Aman's time is not the right person, because he is not into the administration of campus portals, Charmi. So you need to understand where we are speaking, what we are speaking, and what question we are asking, dear. Okay. So yes, I think more or less yes. Aman, you're available on LinkedIn. If these kids wants to get in touch with you and send a connection request, you will be more than happy to have them on their Yeah, sure, LinkedIn portal. absolutely, sir, absolutely. I'll be Okay. able to. So you're And I'm appearing happy with to the name of refer Aman in my Jain. contact as well. Yeah. It's So your ID is simply searchable with the name Aman Jain. yes, and if required, I'll paste my LinkedIn Please do link that. here. Paste that LinkedIn ID. That will help. Aman, it's not appearing right now on the chat box. Did you paste it in the chat? You're on mute, Aman. Yeah, I'm just extracting out, sir. एक Okay. minute.
Did you get it, Aman? Yes, sir. Yeah. Friends, this is Aman's LinkedIn ID. You can connect with him, and please don't bother him with specific day-to-day operational queries. Otherwise, that will become a problem, because the privilege, it's a privilege, but it should not be misused. Aman, please exercise proper discretion before answering day-to-day queries. Otherwise, sometimes it may so happen, अरे इसका भी बता दो, उसका भी बता दो. It should not happen, and it should not take away your mind, beta. Okay? So, I think we can wrap up the session, because the queries have been completed. So, on behalf of all the fresh started accountants, I really thank you, Aman, for pulling out time and taking us through this It's my privilege. journey of business finance. And if you can share this PPT, I will be more than happy to share it with candidates also. And with your due permission, if you allow, we can put up this particular session on YouTube also. If that okay with you? Yes, sir. Absolutely. No problem. Okay. Okay. So, thank you very much, Aman. Thank you, sir. Thank you, sir. Wishing you all the best for your work, and wishing all Thank the you, sir. candidates also for their job hunt. Wishing you all the best for your job, and you can reach to me on LinkedIn. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Aman.